So today's class will discuss about the substitutions. So first we'll understand what is substitutions and then how we'll use it. तो आमे देखिथिबा हमर जति कि भी लास्ट क्लास रे हमें वेरिएबल ऊपर डिस्कशन करतले वेरिएबल ऊपर पढतले राइट तो वेरिएबल शेल स्क्रिप्ट हमें वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी यूज करि सारी छे राइट तो तमरो बेसी आइडियाज नथिला तो बेसी मु जस्ट इंफॉर्मेशंस लाइट इंफॉर्मेशंस ओवरव्यू देइतली सब्स्टिट्यूशन केमति काम करछि गोटे वेरिएबल जेतेबेले गोटे वैल्यू असाइन हैला तो वैल्यू जेतेबेले हमें डिफाइन करछि गोटे वेरिएबल को ताको केमति एक्सेस करिबा राइट केमती सब्स्टिट्यूशंस यूज करिकरी ताको हमें केमती एक्सेस करिबा तो सेटा ही हमें सब्स्टिट्यूशन रे पडिबा राइट ता सहित कोन होची केमती कमांड गोटे सब्स्टिट्यूट करिबा हाउ विल सब्स्टिट्यूट ए कमांड राइट जेमति कि हमें ऑलरेडी देखि सारचे एको भीतर हमें कोन बैक कोड देकरी गोटे कमांड एग्जीक्यूट करूतले ता भीतर हमें कोन सेटा कमांड सब्स्टिट्यूशंस हिसाब रे काम करतला बा कोनसी वेरिएबल रे गोटे कमांड रो आउटपुट को स्टोर करिया पय हमें सब्स्टिट्यूशंस यूज करतले पर जतो तम पाखरे एते आइडियाज नथला सब्स्टिट्यूशंस होते तो आज कंप्लीट आइडियाज हमें गेन करिया व्हाट इज सब्स्टिट्यूशंस देन हमें ऑपरेटर ऊपर जानिबे ऑपरेटर कोन राइट सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशंस let me first do the slide slow here okay so the cell performs substitutions when it encounters an expressions that contains one or more special characters right तो हमें जेतेबेले गोटे वेरिएबल नॉर्मल इन केस ऑफ वेरिएबल कोन होची गोटे वेरिएबल रे गोटे वैल्यू असाइन कराला राइट गोटे वैल्यू असाइन कराला से वैल्यू को हमें जो वेरिएबल को जो यूज करले से वेरिएबल रो सब्स्टिट्यूट करिकरी तार जो वैल्यू ता अछि ताको डिस्प्ले करिया पे हमें सब्स्टिट्यूशंस यूज करबा राइट तो ये पर्टिकुलर सिंपल एग्जांपल जदी हमें देखिबो ए एग्जांपल रे कोन होची हमें कोन करछि गोटे वेरिएबल नै छै a = 10 सो a रो वैल्यू अछि 10 तो a रो वैल्यू ता को हमें डिस्प्ले करिया पे जदी मु यूज करबी त कोन करछि ना a को जो डॉलर सिंबल हमें यूज करछ राइट हम पढे कहितली लास्ट क्लास रे डॉलर यूज होची तो ए डॉलर आ वेरिएबल को जदी हमें राइट माने लिखिबो तो एठी कोन करबे से सब्स्टिट्यूट करके आर वैल्यू डिस्प्ले करबो 10 तक हमर कमांड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस हो जाय राइट एठी कोन होछि ना द वेरिएबल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इट्स वैल्यू ए जो सब्स्टिट्यूट जो वेरिएबल एठी हमें डिफाइंड करिचे ताको हमें एठी सब्स्टिट्यूट करले बा एठी हमें एक्सेस करिया पई डॉलर सिंबल रे यूज करियो से वैल्यू टाको हमें एक्सेस करिवा पई डॉलर सिंबल यूज करिवा तो ताको सब्स्टिट्यूशंस को जाय राइट तो ता सहित कोन होछि ना एठी देखिते गोटे स्लैश n दिया आइछि तो स्लैश n रो काम कोन होछि न्यू लाइन को स्लैश n कोन करिवा ना गोटे न्यू लाइन को सब्स्टिट्यूट हे जो that will create substituted by a new line right that हम एग्जांपल रे देखिबा केमति कोन काम करूची तो सब्स्टिट्यूशन लाइनक्स रे डिफॉल्ट सब्स्टिट्यूशन किसी सीक्वेंस अछि केमति कोन सीक्वेंस काम करूची तो हमें जानितले लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जेतो हमें पढितले स्टार्टिंग लाइनक्स क्लासेस रे राइट तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लाइनक्स स्टार्ट्स विथ directory structure starts with a forward slash so what is this forward slash this is the root directory right root file system this is the root file system I पढि देले पूरा फर्स्ट क्लास रे राइट जेतबेले हम लाइनक्स स्टार्ट करतले तो हम जानतले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऊपर और फाइल सिस्टम ऊपर हम डिस्कशन करतले तो रूट जोड़ा कि हम फॉरवर्ड स्लैश होची दैट इज रूट फाइल सिस्टम और नॉर्मली हमें कहचे रूट डायरेक्टरी राइट तो एठी हमें बैकस्लैश जो यूज करा होची बैकस्लैश तो बैकस्लैश रे एठी डिफरेंट रूल अछि तो हमें जे कोनसी कैरेक्टर लिखुचे बा जे कोनसी सब जे कोनसी कैरेक्टर बा वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करे पय चाहूचे बा यूज करूचे ताको हमें गोटे एस्केप सीक्वेंस द्वारा यूज करिया देखो हमें चाहूचे दीदी बैकस्लैश दबा पाई राइट तो डबल बैकस्लैश देले से सिंगल गोटे बैकस्लैश को नबा गोटे को सब्स्टिट्यूट कर दो सिंगल बैकस्लैश को हमें स्लैश बैकस्लैश देखो एटी फॉरवर्ड स्लैश एटी जो है कोन छी बैकस्लैश ए एटी कोन ना अलर्ट गोटे अलर्ट दबा पाई हमें यूज करिवा स्लैश बी बैकस्पेस दबा पाई स्लैश सी सप्रेस द ट्रेलिंग न्यू लाइन जो न्यू लाइन को जो नॉर्मली गोटे लाइन लिखिला पर प्रोग्राम रे कोन होय छै ना गोटे एक्स्ट्रा न्यू लाइन क्रिएट हे जाय राइट ताको सप्रेस करिया पे हमें बैकस्लैश सी दबा तापरे बैकस्लैश एफ
form feed backslash n hela to create a new line ଆଉ r hela carriage return hyphen t hela horizontal tab ଆଉ vertical tab hela slash b sorry backslash b backslash t backslash r right ଏ ସବୁ ୟୁଜ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ echo statement ଲେଖୁଛେ କିଛି ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ से टाइम रे आमे कोन करबी ना बैकस्लैश आउ ए जो एस्केप सीक्वेंस रोचे आमे यूज कर पारी ओके वी कैन यूज दिस एस्केप सीक्वेंस मन रखि ताओ जदि भी किछि दरकार पला तमे गूगल कर पारिबो इंटरनेट भी सर्च कर पारिबो जदि भी भूली जाओ राइट नेक्स्ट असुछि कमांड सब्स्टिट्यूशंस तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस हमें देखिले ओडे वेरिएबल जेतबे हमें डिफाइन करथिबा बा डिक्लेयर करथिबा ताको एक्सेस करिवा पई डॉलर वेरिएबल नेम देले हमें ताको सब्स्टिट्यूट करछि कि तार वैल्यू ताको हमें पाउचे राइट कमांड सेल स्क्रिप्ट रे हमें जेतबे लेखुचे राइट जो सेल स्क्रिप्ट रे लेखुचे हमें जेतबे ओडे नॉर्मल सेल स्क्रिप्ट लेखिले सपोज bin bash लेखली तो मुझे देठी pwd लेखिली सेल स्क्रिप्ट भितरे पहुंची ना pwd डायरेक्टली एक्जिक्यूट हे छिबो आको हमको सब्स्टिट्यूट करबा पड़िबनी बट सेम pwd की मु जदी गोटे वेरिएबल गोटे डिफाइन करबी सपोज ए गोटे वेरिएबल क्रिएट कली ताकू ए pwd को मु कॉल करबी तो एठी मते कोन करियाबो ना सब्स्टिट्यूट करिया पड़िबो यूजिंग बैककोड राइट बा जदी मु गोटे एको स्टेटमेंट भितरे लेखुची echo statement भितर लेखुची बा echo command भितर लेखुची so current directory is तो मते एठी भी बैककोड भितर ही एग्जीक्यूट करिया को पड़ियो तो एठी से बैककोड भितर एग्जीक्यूट एठी सब्स्टिट्यूशंस हमको यूज करिया पड़ियो जदी डायरेक्टली हमें यूज करछे सबस्क्रिप्ट भितर then we can directly write the command it will execute but जदी सही कमांड को हमें कोन करूछे किछि फॉर्म रे किछि वेरिएबल को असाइन करूचे बा किछि echo statement बा echo commands भितर लिखु हमें को substitute यूज करया पड़े command substitution is the mechanism by which the cell performs a given set of commands and then substitute their output in the place of the actual commands the syntax केमति यूज हो command with backcode एटी देखो हमें कोन कले who am I हमें जानिछे यूजर who am I जत कमांड यूज echo command भितर एठी कोन होछि हमर who am I जे करंट लॉग्ड इन जो यूजर लॉगिन हिचे तार इंफॉर्मेशन शो करी एंड टुडेस डेट इज डेट एटा हम ऑलरेडी देखि सारी छे राइट तो सब्स्टिट्यूशंस बिसरे हम एते के जानले तला कमांड सब्स्टिट्यूशंस एमती बहुत सारा सब्स्टिट्यूशंस तमे सेल स्क्रिप्ट रे सबु बेले यूज करिवो तो तमे रियल सेल स्क्रिप्ट लिखिबो सेल प्रोग्रामिंग लिखिबो सब्स्टिट्यूशंस इज मस्ट गाइस सबु बेले तमे प्राय जगह रे तुमको सब्स्टिट्यूशंस यूज करिया पड़िबो आइदर कमांड सब्स्टिट्यूशंस और वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस किछि भी तमे जे कोनसी जो भी तमे सब्स्टिट्यूशंस यूज करिया पड़िबो तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस हम ऑलरेडी देखितले तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस रे भी अलगा इंफॉर्मेशंस केमति हम सब्स्टिट्यूट करबा तो हमें देखितले जदी गोटे वेरिएबल ना हमें दोचे var राइट var मुनेली एठी एग्जांपल var नि आइची जदी var नि आला तो var नो वैल्यू टा को हमें सब्स्टिट्यूट करि परिया केमति यूज करिक डॉलर var आ गोटे वे हैला डॉलर म ऑलरेडी देखि विद इन द कर्ली ब्रेसेस var सेंथिंग देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ var तबरे तार आउ जो ऑप्शन सब बाकी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस ऑप्शंस रहिल ई गोटे वे रे तमे एटाला कोन डायरेक्टली var र जहा भी वैल्यू अछि सपोज मु var र वैल्यू दे देली रंजीत एठी कोन डिस्प्ले करिवो रंजीत एठी भी डिस्प्ले करिवो रंजीत ओके बट एठी मु कोन करछि ना मु जदी डॉलर var वेरिएबल ना कोलन हाइफन वर्ड तो एठी कोन करिवो ना इफ var इज null और अनसेट माने जदी आमे var रो वैल्यू सेट करि नथिबा किछि देई नथिबा null थिबो तो से कोन करिवो ना सेही जागा रे एठी रंजीत प्रिंट न करि कि वर्ड प्रिंट करिवो वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर var the value of var does not change माने जो var एठी वर्ड अछि जदी मु किछि देइन जदी रंजीत अछि तन रंजीत प्रिंट करिवो जदी रंजीत नाही जदी null अछि var इक्वल टू null एठी जदी किछि नाही तन कोन होबे एठी प्रिंट करिवो एठी जदी किछि नाही देन एठी प्रिंट करिवो word but sen टिके मु चेंजेस एठी कर देली कोन हैला ना if var is null or unset var is set to the value of
word. Var is set to the word. The var एटी कौन हम word is substituted for the var. Word is substituted, sorry, एटी हम कौन word is substituted for the var, but ए केस रे बोध आर जो var रे वैल्यू टाको word हिसाब रे से नहीं जीवो जो word अच्छी. if var is null or unset, var is set to the value of word. जो word रे जो वैल्यू अच्छी तार सेटा सेट ही जो. ओके सेकंड अच्छी सेकंड जो सॉरी फोर्थ रो अच्छी var colon question mark आउ किसी message हमें दोचे, right? if var is null or unset, message is printed to standard error. इटा हमें प्राय conditions हमें यूज करिबा. if var is null or unset, message is printed to standard error. जदी variable null तो कोटे requirement आसीबो माने धरो मु लॉगिन करछि धरो सपोज किछि गोटे नै गली फाइल ना सपोज ओके मते एठी किछि गोटे फाइंड करियर अछि किछि गोटे फाइल फाइंड कली तर आर रिजल्ट फाइल स्टोर हैला. जदी फाइल ता फाइंड हेकरी स्टोर हैला देन कोन करिवो प्रिंट करिवो. जदी फाइल ता null हे गेला जदी फाइल ता null हे गेला कोन आसीबो तो सोडे मेसेज एरर मेसेज प्रिंट करिवो. The same thing एटी colon clause रे if var is set, word is substituted for var. तारा सब गोटे सिंपल एग्जांपल दे दो तमे जानि परिबो क्लियरली केमती एटा काम करूची, राइट? तो सब्स्टिट्यूशन रो एग्जांपल गोटे देखि हमें सब्स्टिट्यूशंस पड़ेगा. ओके तो सब्स्टिट्यूशन रो कमांड हमें देखिबे गोटे जस्ट डेमो फाइल नै जाउची substitutions demo dot search. Okay, quickly binbas methodology, sorry binbas. तो हमें ठीक कौन करिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन रे जेतु डेमो हमें दोचे तो मु गोटे सिंपल var नहीं गली वेरिएबल नहीं गली तमे xyz चाह भी ना दिए गोटे धरो सपोज वेरिएबल var नहीं गली इक्वल टू ओके मु एटी गोटे किछि भी वेरिएबल दे देली हेलो सिंपल दे देली हेलो, राइट? तो मैं आपको प्रिंट करिवि, राइट? ताको प्रिंट करिया गेले मते कोन कर सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करिया पड़िबो. तो var टा गोटे हमें डिफाइन कले गोटे वैल्यू असाइन करछे हेलो ताको मु जते एक्सेस करिवि तर वैल्यू देखिबा अछि तो मते सब्स्टिट्यूशंस यूज करिया पड़ी से वैल्यू से वेरिएबल टू सब्स्टिट्यूट करिया पड़िबा, राइट? क्यों लिखली डॉलर सब्स्टिट्यूट करबी, राइट? डॉलर var तो कौन करिवो डॉलर var हला कोन var वैल्यू टाको सब्स्टिट्यूट करिए प्रिंट करिवो हेलो हेलो रंजी, राइट? लेट्स सी. ओके से कौन कला रंजीत प्रिंट कला खाली बट हेलो प्रिंट कलानी कौन दला एठी हेलो कमांड नॉट फाउंड कि मते कोइ परिबो कोन एरर एठी जानि कि एरर रखि छिटी कोन पई एरर शो कला एठी मते सिंपल गोटे वेरिएबल टाको var पाखरे इक्वल var पाखरे जो इक्वल देसला पर स्पेस अछि बोली एग्जैक्टली. तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया आइछि तो सेति पई हमरो एरर शो कला. तो लाइनर सेल स्क्रिप्टिंग रे तो जेतोल तुम वेरिएबल असाइन करछो बोथ साइड रे, राइट? बोथ साइड रे तुम स्पेस दबनी हम जदी एटी भी स्पेस दे दबा देन इट विल थ्रो एरर, राइट? सो वी शुड नॉट गिव एनी स्पेस आइदर साइड ऑफ द इक्वल सिंबल. ओके जेतोल किछि भी असाइन करूछे हमें किछि स्पेस दबा, राइट? सिमिलरली हमें जदी कंडीशंस पड़े हम बहुत किछि देखिबा जेतु हमें सेल स्क्रिप्टिंग जानि छै कोन गोटे कौन केस सेंसिटिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट? जोटा कि हमें जहाँ भी यूज करूचे लाइनक्स गोटे केस सेंसिटिव किछि भी वेरिएबल लिखुचे var
small lower case and var upper case both are different, but windows रे कोन हबो same ही जिवो, right? जेतु both upper case lower case same treat करिवो, but linux रे both are different, right? तो एठी आमे स्पेस जेतबे दउचो देखो अलगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे आमे एठी स्पेस दे परिबा, जेकोनसी बोथ जेकोनसी साइड रे तमे स्पेस दलो बा बोथ साइड रे स्पेस दले किछ प्रॉब्लम नै, बट लाइनक्स रे एठी न बनी, राइट? सेटा देखिबो केयरफुली जेतबे प्रोग्राम कलो, बट तमे जेतबे प्रैक्टिस करियो रेगुलर डे टू डे तमे इजीली हे जिवो, राइट? फाइन, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट. सो प्रिंट कला कोन हेलो रनची, राइट? तमे जो वेरिएबल टा हमें सब्स्टिट्यूट कर देले एठी, simple, very simple. Now let's see an example of a command, right? जो command हमें देखते हैं, इस command रे example देखिए, suppose something who am I, right? So एक who आगे suppose I'll give I have okay. Let's give backcode command substitutions, right? So it is a variable substitute kali it con deli dollar symbol, simple, no need to give any backcode here, right? But whenever you are giving substituting a command, you should substitute within the backcode, or you have to give create a subset. I'll show you how you can do that one in another program, right? Okay, suppose who am I? Who am I got a command? तो लिखिले डी बैककोड भी देली तो ये सब्स्टिट्यूट करी कि माने हु एम एटा एग्जीक्यूट करियो, जदि मु बैककोड न देबी से कोन करियो आज ए टेक्स्ट एटा प्रिंट कर दबो, आज ए टेक्स्ट एटा प्रिंट करियो, राइट? सो लॉग इनटू द मशीन, सिंपल, राइट? तो स्टेप पे कोन करियो हु एम आई माने ये लॉगिन हिची, राइट? तो बर्तन EC2 यूजर, राइट? तो मैं तो काम करी एग्जीक्यूट करी से कोन कला EC2 यूजर लॉग्ड इनटू द मशीन, परफेक्ट, राइट? द सेम थिंग हमें ठीक कोन बैककोड यूज कले तमे आउ गोटे वे रे भी सब्स्टिट्यूट करि परियो, सेटा हला कोन इंस्टेड ऑफ गिविंग बैककोड यू कैन यूज डॉलर, sorry, you can use dollar parenthesis, okay, within the parenthesis मुझे डेटा यूज करछु हु एम आई, देन ये कौन करियो ना गोटे सबसेल क्रिएट करियो ता भितर एटा को एग्जीक्यूट करियो, ओके? से कौन करबो हु एम आई को एग्जीक्यूट करियो. लेट्स सी दिस वन, सी एका काम कला ना नहीं, आइदर तमे बैककोड यूज करि परियो, रिमेंबर either you can use the backcode or using dollar parenthesis you can find this, okay? तुमको जोटा सुविधा लागु समय यूज कर परियो, but this is a very good way to write the program, right? Backcode यूज कर परियो ठीक है. Let's keep it as backcode, okay? Backcode रखी की चली, okay? फॉर्मेट now तो हमें एटा जानिले तापर और जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट ऊपर देखुतले, राइट? कौन वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस ता हमें देखतले जोटा कि हमर var देखिले var word विषय जो गोटे word नेतले कोन var is null or unset, word is substituted for var, the value of var does not change, okay? तो हमें कौन करिबा एटी सपोज कौन कली echo simple things मु ले रहउची echo ये जो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशंस अछि सेटा को यूज करछि सपोज, राइट? लेट्स कॉपी दिस, use okay तो एठी हमें बार कौन करछे हेलो यूज करछे, राइट? लेट्स चेक दिस वन. सो एठी कौन कला हेलो प्रिंट कला, राइट? हेलो काई प्रिंट कला काई ना ऑलरेडी var रा हम वैल्यू असाइन करिछि, जदी var रो वैल्यू हमें असाइन करिबानी, राइट? जदी var रा वैल्यू टा को हमें असाइन करिबानी, मैं एटा को भी कमेंट कर दोछि तो हमें जानि छै एटा कमेंट करा हुए, राइट? कमेंट हमें जानि छै कमती कमेंट has चला Linux स्क्रिप्ट ने it treat as a comment,
ओके सो कमेंट कर देली वेरिएबल लाइन टाको ही कमेंट कर देली तो एठी मु var कोलन हाइफेन word देछि लेट्स सी सिटी कोन कला जस्ट word प्रिंट कला जेतु var को हमें डिफाइन करिने राइट तो हमें जदी बेसिकली मेटा काई शो करछि तमे जदी वर्ड टाको भी शो करी खाली जदी var को सब्स्टिट्यूट करबा को चाहिबो डिफाइन न करिकि देन कोन हो लेट्स सी दिस वन माकू कोन करछि डिलीट कर दोछि ओके खाली var को मु सब्स्टिट्यूट कर किंतु var को मु डिफाइन करिनि एटा मु कमेंट कर देछि राइट ए लाइन टा मु कमेंट कर देछि जोटा मु ऑलरेडी डिफाइन करथिल ताको वर्तमान कमेंट कर देछि राइट कमेंट करला माने सेल एटा को इग्नोर कर दबो ए लाइन टा को राइट मु वर्तमान var कर तो एठी कोन करबो से एरर थ्रो कर जो var इज नॉट defined. Okay. So in Linux shell scripting, remember, it will not show any error, but it will just give you the blank, null. Remember, okay? It will not throw any error, but it will give you just simple blank message. Don't get confused. Okay. Other programming language, if you not defined a variable, it will throw you error. But in shell scripting, if you not defined or not assigned a value to a variable, it will not throw any error. Simply give you blank or give you null. Okay. Now what I'm going to do, the same thing. Let's colon word. तो ये हम जदी assign न करबा कोन होला ना word print कला राइट तो नेक्स्ट लाइन रे हमें कोन करबा सेम मु लिखुछ एको तो एठी मु कोन करछि सही आउ गोटे नेक्स्ट जो कमांड हम देथले असाइन कले गोटे वैल्यू को हमें असाइन कले तो एठी कोन हैला ना जदी var null अछि देन word कोन हे जीवो ना असाइन हे जीवो राइट लेट्स सी एठी कोन करे एक्जीक्यूट बोथ word शो कला word राइट मु एठी आउ टिके चेंजेस कर दोछि जे दुटा word हे गेला तो मु एठी कोन करछि कुमार लिख दोछि कुमार सेव एक्जीक्यूट कुमार प्रिंट कला कुमार तो प्रिंट कला ता सहित कोन कोन से वैल्यूटा असाइन हे जियो var को राइट लेट्स प्रिंट द वेरिएबल तो मैं एठी बे प्रिंट करबी दी जगह मु प्रिंट करछि ओके एको $var substitute करछि plain substitutions now I'm going to do here also. Let's see which one is printing and which one is not printing. Same thing, right? Let's save this. Execute. कौन है ना? एटी blank देखेला. तो कौन कोई ची हमर? कौन कोई ची टी? एक केस रे कौन होची? Word is substituted for var. तो हमें जो एटी word लिखी चे, तो सेटा substitute है जो var जगह तो var रा वैल्यू null अछि ना null जगह सब्स्टिट्यूट word प्रिंट कलास हमें थी word प्रिंट कला बट एटी डाटा तो स्टोर हेलानी var वेरिएबल रे जो वैल्यू टा स्टोर हेलानी राइट तो सेति पैंटी null देखेला नेक्स्ट केस रे अछि कोन मु गुटे कुमार लिखली जोटा कि मु इक्वल देकरी असाइन कर देली एटा कोन प्रिंट करूची कुमार एको जो प्रिंट करूची कुमार ता सहित ए कुमार रा जो कुमार वैल्यू टा असाइन हे जाउची कोडी की वेरिएबल तब हम प्रिंट करछि देन डिस्प्ले क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट I would example दे दवा बाकी एग्जांपल ओके एटा हला ओके सिंपल एटा मो एग्जांपल दे दो छे ओके तो कोन होछि ना एठी कोन कहला ए केस रे if var is set माने जदी var जदी set हेछि then word is substituted for var मैं प्लस देछि ते माइनस नै एठी जदी null अछि then এটা substitute होबो एठी जदी अछि substitute होबो राइट तो substitute होबो but the value for var does not change var value टा change होबन राइट लेट्स सी केमते अछि मैं एठी कोन करली सिंपल कोन करछि एटा को
सेट कर दूची माने डिफाइन कर देली वेरिएबल रो वैल्यूटा असाइन करती राइट तो असाइन कला पर ये सब रो केमती चेंज एठी हमर कोन ई जो दुईटा रहिला एटा जदी नल देन प्रिंट करिवो जदी नल नाही देन प्रिंट करिवनी राइट ए दुईटा प्रिंट करिवनी बट एठी कोन करिवो ना सब्स्टिट्यूट कर दबो वर्ड को राइट वर्ड को मु चेंज करिकरी अलगा किछि उडे लिखि दोछि सपोज मु लिखि दली रिलेशंस ओके लेट्स सी एग्जीक्यूट देखो एठी प्रिंट कला हेलो 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 रंजी काहे कि जदि हम सिर्फ फाइल ता हमें देखिबा सॉरी सबस्क्रिप्ट ता हमें देखिबा एठी कोन हेल प्रिंट कला कोन हेलो हेलो रंजी तेटी देखो हेलो हेलो के काई चारि थर प्रिंट कला एठी फर्स्ट हमें कोन देखिथिल जदि नल अछि देन ए लाइन ता प्रिंट करिवो काम करिवो नल काम करिवोनी त हमर वैल्यू नल नाही वैल्यू ऑलरेडी असाइन हेछि वेरिएबल नल नाही राइट वैल्यू ऑलरेडी असाइन हेछि तो से कोन कला ए वेरिएबल जो वैल्यू एटा को हमें एठी सब्स्टिट्यूट कर देले डॉलर var दे देले सो एठी प्रिंट कर देला हेलो सेकंड नल नाही एठी प्रिंट कला हेलो तीसरा प्रिंट कर देला हेलो थर्ड तरह कोन कला ना से एठी हमें var फर्स्ट वैल्यू कोन अछि हेलो प्रिंट कला राइट एठी हमें कोन देले if var is said word is substituted word but the value of var does not change ता माने कोन हला हम एठी तो रंजित दे देले किंतु तार वैल्यूटा चेंज हेलानी से कोन कला हेलो प्रिंट कर बट जेतो हमें रंजित ऑलरेडी असाइन करी देछि एठी प्लस देखि तो नेक्स्ट जो हम एको लिखिछे तो तार वैल्यू से रंजित प्रिंट कर दूछि एठी कोन कला से रंजित प्रिंट कर देला राइट तो एमती तमरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस काम करूछि राइट कंप्लीट आइडियाज पाइलो सब्स्टिट्यूशंस ऊपर तो काई कि मु एटा सब्स्टिट्यूशन आगु पढै ना जमे तो ऑपरेटर पढिबा तापरे कंडीशंस पढिबा त इसमें सब्स्टिट्यूशंस बहुत यूज हो तो जदि हम के सब्स्टिट्यूशंस आइडियाज ओवरव्यू तुमको दे देली आ छोटो मोटो जो प्रैक्टिस कले तो तुम जानि गलो कंप्लीट आइडियाज राइट वेरिएबल केमती डिक्लेयर करे बा डिफाइन करे ता केमती सब्स्टिट्यूट कर द वैल्यू को एक्सेस करबा एंड ऑल राइट सो लेट्स मूव इनटू द ऑपरेटर ऑपरेटर हमें जानिबा ऑपरेटर कोन ऑपरेटर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे ऑपरेटर यूज हुए से ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अच्छी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे सेमती की सेल स्क्रिप्टिंग रे भी 5 बेसिक ऑपरेटर्स हमें देखिबा गोटेला अरिथमेटिक ऑपरेटर जोटा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पन यूज हो ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन ऑपरेटर बिटवाइज एंड फाइल टेस्ट ऑपरेटर ये सब ऑपरेटर हमर बहुत इंपोर्टेंट तो ये ऑपरेटर विषय आज डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्लास रे में भी हमें विल मूव इनटू द if condition the file decision making ऊपर पढ़िबा राइट सो लेट्स सी व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर को ऑप्शंस रहउची कोन कोन ऑपरेटर रहउची अरिथमेटिक ऑपरेटर राइट एई पांचटा ऑपरेटर मन रखिताओ अरिथमेटिक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन ऑपरेटर्स बिटवाइज फाइल टेस्ट ऑपरेटर बहुत इंपोर्टेंट अभी से हम डिस्कशन करेंगे ओके अरिथमेटिक ऑपरेटर वेरी सिंपल राइट तमे समस्त बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बिलोंग्स करूछ ऑलरेडी तमे किछ ना किछ जानि थिबो राइट किछ ना किछ प्रोग्रामिंग छोटो मोटो छोटो बड़ प्रोग्राम करी थिबो तो सेंती हम जानछे प्लस माने एडिशंस सब्सट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन मॉड्यूलस बार करया पई असाइनमेंट ऑपरेटर ई दीटा भीतर तमे जमा कंफ्यूज होबनी हम सिंगल इक्वल सिंबल दोचे देन असाइनमेंट माने हमें गोटे वैल्यू किछि गोटे असाइन करूचे हमें किछि गोटे वैल्यू असाइन करूचे देन हमें सिंगल इक्वल सिंबल यूज करूचे गोटे वैल्यू असाइन करूचे एटा हला इक्वालिटी ऑपरेटर हमें ताको कोनी इक्वालिटी ऑपरेटर कंपेयर्स टू नंबर एटा हला इट कंपेयर्स टू नंबर आ विषय में डिस्कशन करबा डिसीजन मेकिंग पढिबा ता विषय हम जानि एटा भी नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर जोटी कि हमर दुईटा कंपेयर कराबो दुईटा नंबर को कंपेयर कराबो तो एडिशन जदी हमें दुईटा वैल्यू नैचे सपोज एटी में एग्जांपल से 10 20 सिंपल जदी नियाइछि देन एडिशन कले कोन अपन जदी दुईटा वेरिएबल नेली $a और $b ओके तो सपोज a रो वैल्यू नै गले 10 b रो वैल्यू सपोज हम नै गले 20 राइट तो एटी हमर नॉर्मल कैलकुलेशन से तले करिया कोन अब नॉर्मल कैलकुलेशन से तले करियो EXP वाला कमांड जो यूज करम कैलकुलेशंस पाई राइट तो डॉलर सिंपल हमें यूज करबे एठी कोन करो $a प्लस $b आ गोटे मन रखि दो तमे जतोले ऑपरेटर एठी यूज करछो बोथ साइड वेरी इंपोर्टेंट स्पेस दबो
आ जदि स्पेस न दबो देन एरर थ्रो करिवो स्पेस न दबो एरर थ्रो करिवो तो हमें सिंपल जस्ट प्रैक्टिस कर दो बहुत क्विकली राइट तो ओके तो हम दीटा वैल्यू नहीं गली a equal to 10 b equal to 20 राइट सो फर्स्ट हमें एडिशंस देखिबा बहुत जल्दी अल्प किछटा एग्जांपल दोची सब जगह दोनी काय अननेसेसरी टाइम ना तुम इजीली प्रैक्टिस कर परिबो घरे राइट तो a equal to 10 b equal to 20 नहीं गली तो मु कोन करिवि ना जस्ट सिंपल गोटे expr कमांड देबी expr ओके तो एठी मु कोन करबी दीटा वैल्यू ऐड करबी राइट तो तापे कोन करबी ना $a प्लस $b देखो एठी मु कोन करने दुईटा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस देले एठी गोटे स्पेस जदि मु न दोउछि त एरर थ्रो करिवो तो ये कोन करिवो ना दीटा को कैलकुलेट करके मते रिजल्ट शो करिवो राइट लेट मी क्विकली शो यू कोन गला 30 राइट 30 शो गला तो मु एठी ताको टिके मॉडिफाई कर दोछि मु ताको चाहूछि एटा को कोन एको कमांड भीतर रखिबी तो एको कमांड भीतर रखले मते कोन करिया पड़िबो सब्स्टिट्यूट करिया पड़िबो एबे देखो मु प्लेन सबस्क्रिप्ट भीतर नॉर्मल सबस्क्रिप्ट भीतर लिखिछि कमांड ता तो मते सब्स्टिट्यूशंस दरकार पइलानी कारण डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट हे गेला जेतु मु कमांड प्रॉम्प्ट रे ही लिखिछि तो मते डायरेक्टली एक्सपीआर लागो जदि से कमांड को मोडे एको स्टेटमेंट भीतर किबा वेरिएबल को असाइन करूछि देन वी शुड सब्स्टिट्यूट इट राइट तो मु एटा कोन करछि गोटे एको स्टेटमेंट भीतर रखियो चाहूछि एको addition of a and b is सिंपल राइट मु कोन कले एटा डबल कोट भीतर जो टेक्स्ट प्रिंट करियार थिला प्रिंट कले आउ ये एक्सपीआर a plus b ओके तो तापर कले कि एको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वे दीटा एग्जांपल दो जो बाकी एग्जांपल तुम ट्राई कर दो घरे एंड बी इज तो मते ये एक्सपीआर $a स्टार $b okay now let's see save कर दली let's execute what is the syntax error expr the syntax error एठी कोन हैला एडिशन ऑफ a एंड b 30 देखे देला बट सेकंड जतले मल्टीप्लिकेशन कला सेठी कोन सिंटैक्स एरर शो कला लेट्स सी व्हाई इट शोड द सिंटैक्स एरर okay can anybody tell okay maybe I have not told you see आमे यूज करछ स्टार एठी आज मल्टीप्लिकेशन स्टार होची मल्टीप्लिकेशन पाई हम स्टार ही यूज करिबा राइट मल्टीप्लिकेशन सिंबल बट एठी कोन कोछि ना लाइनक्स रो एटा हला गोटे स्पेशल कैरेक्टर स्टार होची लिनक्स रे गोटे स्पेशल कैरेक्टर तो जेतुटा गोटे स्पेशल कैरेक्टर आमे को कोन यूज करे पड़िबो एठी बैकस्लैश टू रिमूव द स्पेशल इफेक्ट ऑफ दिस स्टार तो आमे तो बैकस्लैश एठी दे दबो कोन हबन तारा स्पेशल कैरेक्टर जो येटा सदा हटि जीवो तो बर्तमान एठी नॉर्मल स्टार हे जो जोटा कि मल्टीप्लिकेशन पे काम करबो ओके तो हम सेव कर देले एठी एग्जीक्यूट सी बर्तमान मल्टीप्लिकेशन हे गेला कला 200 बुझि पड़लो तो सेमिति डिवीजन रे भी देखो प्लस रे तो हमें देलेनी कारण प्लस इज नॉट ए स्पेशल कैरेक्टर जति कि स्पेशल कैरेक्टर अछि ताकू हमें सब बेले बैकस्लैश यूज करबा जेतो हमें सब्स्टिट्यूशन रे बैकस्लैश एति पे मु तुमको देखौतली राइट बैकस्लैश यूज करले जो जे कोन सी कैरेक्टर हमें यूज करूचे स्पेशल कैरेक्टर तार स्पेशल नेस्ट बा स्पेशल इफेक्ट कमी जीवो रहिबनी टोटल तो एठी हमें कोनला मल्टीप्लिकेशन ता
जेहेतु डायरेक्ट स्टार यूज कली जेहेतु स्टार टा गोटे स्पेशल कैरेक्टर तो ये एरर सिंटैक्स एरर शो कला तो ताकू मु तार स्पेशल नेक्स्ट टा स्पेशल इफेक्ट टा हटाई देली बाय यूजिंग बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश दबनी बैकस्लैश दबो ठीक अछि देन स्टार काम कला तो सेम एग्जांपल भी एठी अछि एक्चुअली देखो बैकस्लैश राइट ता काम करछि डिवीजन रे फॉरवर्ड स्लैश देछ इट विल वर्क ओके मॉड्यूलस रे भी सेमति नॉर्मल काम करियो माइनस भी नॉर्मल काम करियो बाकी जंत अछि सेमति काम करियो राइट तो कंपैरिजन ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर हमें कोन करछ हमें जानि छ असाइनमेंट ऑपरेटर मु जदी एठी ओके फाइन नाउ लेट्स सी मु जदी एठी a इक्वल टू मु कोन कली a इक्वल टू डॉलर b कर देली तो बर्तमान a रो वैल्यू कोन हे जिवो कैंसर दो a रो वैल्यू कोन हो 20 एग्जैक्टली a रो वैल्यू 20 हे जिवो काहे कि ना b रो वैल्यू 20 अछि तो b रो वैल्यू को मु एठी सब्स्टिट्यूट कर देली और असाइन कर देली a को त माने a वर्तमान 20 हे गला एठी a 10 थिला फर्स्ट b 20 थिला त मु गदी a रो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देली b रे लेट्स सी एबे कोन हे जिवो 40 हे गला सी 20 plus 20 40 हे गला राइट एडिशन तो सेटा ला हम इठी कोन कली मु यूज कली असाइनमेंट ऑफ सॉरी एटा कोन हला असाइनमेंट ऑपरेटर मु असाइन कली गोटे इक्वालिटी पाई हमको डबल इक्वल सिंबल दे देबो से कंपेयर करिवो दीटा वैल्यू a इक्वल टू b त माने से कंपेयर करबो a आ b भीतर कहार वैल्यू a रो b रो a रो आ b रो वैल्यू इक्वल अछि ना नहीं तो हमें कंडीशंस डिसीजन मेकिंग पड़े ता विषय बहुत जानबे राइट तो नेक्स्ट ऑपरेटर कोन अछि हमर अरिथमेटिक ऑपरेटर जानले नेक्स्ट ऑपरेटर हमर होछि रिलेशनल ऑपरेटर भी बहुत इंपोर्टेंट गाइस मु पढै दोछि हम तापर कंडीशंस पढला बे एक सब प्रैक्टिस करबा ठीक अछि रिलेशनल ऑपरेटर कोन होछि ना माने हमर जो दीटा वैल्यू रो कंपैरिजन करबा ताऊ कहबे कंपेयर करिया पई जदी a रो वैल्यू इक्वल टू b रो वैल्यू की नहीं a इक्वल टू b की b और नॉट राइट तो हमें कोन करे ना जतबे हमें इक्वल सिंबल यूज करू a नॉर्मल प्रोग्रामिंग a इक्वल टू b एठी चेक करे बट लाइनक्स हमें एठी कोन करछु ना दीटा डिफरेंट वे रे जदी हमें किछि ऑपरेंट माने हमें यूज करू छ कोन टेक्स्ट बा स्ट्रिंग तो हमें यूज करबा हाइफन इक्वल eq हाइफन eq राइट तो चेक करबो a हाइफन eq $b इज नॉट ट्रू जदी नुह तले इक्वल नुह देन ट्रू हमर a कोन छी a नै छै 10 b नै छै 20 तार वैल्यू ऊपर से लिखु छी ट्रू बोली तो एठी कोन हला a इक्वल टू b नो ट्रू नो नेक्स्ट अछि नॉट इक्वल eq हला इक्वल any हला हाइफन any माने हाइफन ता दोतबो हाइफन any हला नॉट इक्वल तो एठी हला a नॉट इक्वल यस ट्रू का दीटा समान नो अलग अलग ग्रेटर देन b gt ग्रेटर देन gt हाइफन gt ग्रेटर देन नो 10 20 टू ग्रेटर देन नो नॉट ट्रू नेक्स्ट हला लेस देन lt yes true a डाला लेस देन b तापरे ग्रेटर देन इक्वल एठी हला ग्रेटर देन इक्वल ge ग्रेटर देन इक्वल सो वैल्यू चेक करिवो जी a टा ग्रेटर देन और इक्वल अछि कि ना ग्रेटर देन इक्वल नहीं तापर देखियो लेस देन इक्वल यस लेस देन अछि राइट a लेस देन इक्वल टू b ट्रू लेस देन अछि राइट सो बेसिकली जहां भी हमें एटा टेस्ट करूचे एटा स्क्वायर ब्रैकेट भीतर ही रहइबो स्क्वायर ब्रैकेट भीतर रहइबो आ एता में तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखुचे तो स्क्वायर ब्रैकेट रे सेति पई जो स्पेस ता हमें देउतले हमें कोन कले जो एग्जांपल में वर्तमान हमको बतन गोटे दिखे दोचे हमें कोन कले नॉर्मल दीटा एडिशंस करथिले राइट expr कमांड यूज करिकरी expr कमांड यूज करी दुईटा वेरिएबल एडिशन करथिले $a प्लस
$b तो हमर ए जो दीटा जगह रे स्पेस रहिबा दरकार एठी और एठी स्पेस रहिबा दरकार राइट तो सेमिति हम जो इक्वालिटी ऑपरेटर बा रिलेशनल ऑपरेटर जो ये करछे धर हाइफेन इक्यू मु यूज करली मु चेक करबी सपोज ए रो वैल्यू 10 बी रो वैल्यू सपोज 20 नहीं जाने राइट मु एठी सपोज यूज करली कोन चेक करिया पे तो आमे कोन करियो तो कंडीशंस हमें चेक करछे सब बेले स्क्वायर ब्रैकेट भीतर यूज करबो तो स्क्वायर ब्रैकेट तुम यूज करबो स्क्वायर ब्रैकेट जेतु एबे कंडीशंस गोटे चेक करूछे you should always do a square bracket you should keep all these things inside a square bracket तो मु एठी कोन करली डॉलर ए आ पर गोटे स्पेस दबो स्पेस नदले एरर थ्रो करबो डॉलर ए स्पेस दबो हाइफेन eq स्पेस दबो डॉलर b देन स्पेस देकरी एंड करिवो कोन ला एटी स्पेस रहइबो एटी स्पेस रहइबो एटी स्पेस रहइबो आउ एटी स्पेस रहइबो राइट so all these places you have to give space all these places you have to give space so if you don't give space then it will throw error mone rakhitao this is very important okay this is very important ko jaga re एठी 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 तो सब जगह रे तुमको स्पेस दबा पड़िबो जे कोन भी स्क्वायर ब्रैकेट भीतर तमे कंडीशंस लिखिलो फर्स्ट स्पेस दबो गोटे डॉलर ए हाइफेन सपोज लेस देन मु लिखिली स्पेस दे चटी देन एठी भी गोटे स्पेस डॉलर बी देन एठी स्पेस ओके सो यू हैव टू राइट दिस ऑपरेटर लाइक दिस राइट जेतले हमें कंडीशंस देखिबा डिसीजन मेकिंग देखा सेतले हमें कंप्लीट एग्जांपल्स करिब ता विषय हमें कंप्लीट आइडियाज पाइछो ये रिलेशन ऑपरेटर विषय जानिलो राइट तो गाइस हमें तो प्रोग्राम करबे त विषय डिसीजंस मेकिंग विषय जाने ता विषय हमें कंप्लीट जानबा तो नेक्स्ट आसुची बुलियन ऑपरेटर तो बुलियन ऑपरेटर कोन होची बुलियन ऑपरेटर जो एंड आउ और बुलियन गेट तमे जानिथिबो इंजीनियरिंग नेटवर्किंग रे पढिथिबो राइट बा तमरो जो प्रोग्रामिंग रे जानिथिबो केमते बुलियन ऑपरेटर्स काम करे बुलियन कोन जे ट्रू फॉल्स रे रहउची राइट ट्रू फॉल्स रे रहउची लॉजिकल और बा लॉजिकल एंड तक कुआ जाय तो एठी जो ऑपरेटर रहउची गोटे रहला एक्सक्लेमेशन चिन्ह जोडा रहउची एक्सक्लेमेशन ता सेटे कोन होची ना हमर तमरो लॉजिकल ऑपरेटर रे सेटे जोड़ा बुलियन ऑपरेटर जोड़ा यूज होची नॉट हिसाब नेगेशन नॉट दिस इज लॉजिकल नेगेशन दिस इन्वर्ट्स ट्रू कंडीशंस इनटू फॉल्स एंड वाइस वर्सा नॉट फॉल्स मींस ट्रू नॉट फॉल्स मींस ट्रू नॉट ट्रू मींस फॉल्स वाइस वर्सा सेमती एटाला लॉजिकल और कोन हम यूज करबो कोन ए और बी राइट dollar a sorry hyphen o right hyphen o dollar b तो एटा हमें कोन करले चेक करले बट एठी जो कंडीशंस हमें एटा लिखले एटा इमित लिखा हुए ना तुमको बते देबी कंडीशन डिसीजंस मेकिंग रे डॉलर a मु एठी कोन करली यूज करली सपोज gp ग्रेटर देन डॉलर b hyphen o or dollar a less than dollar b okay तो एठी कोन होला ना और ऑपरेट लॉजिकल हाइफेन ओ टा एठी कोन होउची हाइफेन ओ टा होउची एठी लॉजिकल ऑपरेटर और हाइफेन ए टा कोन होची हमरो सॉरी लॉजिकल और ऑपरेटर और इटाला लॉजिकल एंड ऑपरेटर हाइफेन ए टाला लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो हमें समस्त जानिछे लॉजिकल और माने जेतोला हमें कंडीशंस डिसीजन मेकिंग टाइप रे जानिछे हमें जदी टेबल टा देखिबा लॉजिकल टेबल टा देखिबा
फर्स्ट हम जो टेबल रे रोची कोन और रे और टेबल जदि हम देखिबा कोन होची ट्रू जदि ट्रू हैला कोन हो एटा एटा हम समस्त जानि छै ट्रू 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 फॉल्स कोन हो ट्रू फॉल्स कोन हो लॉजिकल और रे लॉजिकल और रे ट्रू फॉल्स कोन हो ट्रू हो ओके फॉल्स ट्रू ट्रू और एटा नले सहीटा एटा किंबा सहीटा मते दुईटा दरकार मते फल सपोज मते गोटे एप्पल दरकार गोटे ऑरेंज दरकार जे कोनसी गोटे गोटे फ्रूट हेले मोर चलिबो आइदर एप्पल किंबा ऑरेंज तो मते यदि एटी एप्पल मिली गला देन ट्रू ऑरेंज मिलु कि न मिलु दुईटा भितर मते जे कोनसी मते फल दरकार आइदर एप्पल मिलुची किंबा ऑरेंज मिलुची राइट तो मते यदि एप्पल मिली गला ट्रू हे गला ट्रू जदि एटी ऑरेंज मिली गला देन ट्रू हे गला एप्पल न मिलुची नै मते गोटे फल दरकार आइदर एप्पल और ऑरेंज ता भितर जहा भी मिलले मोर ट्रू राइट जदि दीटा का न मिलिला देन false so logical or case रे जदि both false then it's false otherwise it is true but in logical and रे कोन होची that is different logical and रे मते एटा आउ सेटा both दरकार तो एटी कोन हबो ता माने दुईटा जाका जदि ट्रू हैला ताले ट्रू हबो मते एटा मिलबो एटा भी दरकार तो मते एप्पल दरकार ऑरेंज भी दरकार बट ऑरेंज मिललानी तो एटी कोन जो फॉल्स हे जो बट लॉजिकल और रे कोन हला ट्रू हे गला एटी एप्पल मिललानी बट ऑरेंज मिल गेला कोन हो फॉल्स हे जो मते दीटा का दरकार दीटा गोटे फॉल्स हला माने फॉल्स आउ किछि न मिलिले सेटा भी फॉल्स राइट तो केवल both side of both operand जदि value अच्छी then conditions met करछि then true right logical और and विषय पूरा clarity पाई गलो कम भाई तो सेटा हमें यूज करिए लिनक्स रे कोन होछि शेल स्क्रिप्ट रे और टाको -o यूज करबा आ वेट -a सिंपल then next time बुझिबो string operator तो हमें भी जोटा ऑपरेटर देखले रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली हमें इंटीजर्स बा न्यूमेरिक ऑपरेटर यूज करियो हैपन इक्वल 10 20 नै कि हमें टेस्ट करतले राइट तो हमें जेतो स्ट्रिंग ऑपरेटर देखिए सेठी हमर आउ हाइपन eq काम करिबन सेठी तमे यूज करिबो कोन कहलो ये असाइनमेंट आउ इक्वल ऑपरेटर ना सॉरी एटा काम करिवो सॉरी एटा काम करिवो बट स्ट्रिंग ऑपरेटर होछि टिके डिफरेंट रहउछि राइट लेट्स सी व्हाट इज दिस जदि हम एटा एग्जांपल नेछि दीटा स्ट्रिंग नेछि गोटे स्ट्रिंग सपोज abc होल्ड करछि आ गोटे xyz होल्ड करछि ठीक तो abc इक्वल टू xyz नो राइट तो चेक्स इट तो ई जो वैल्यूटा एटी चेक करूछि ए ऑपरेटर एटी कोन करना चेक द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट ओके तापर एठी अछि नॉट इक्वल सिंपल तार हाइपन जेड ई जो तुनीटा रहिला एटा बहुत केयरफुली बुझो एटा बहुत इंपोर्टेंट आसीबो तुमको सबस्क्रिप्टिंग रे ओके इक्वल टा हम जानि गले इफ $a इक्वल टू $b दीटा स्ट्रिंग $a abc नै छै $b टा में xyz नै छै जदी इक्वल हला कोन हबो $a इक्वल टू $b इज नॉट ट्रू जेतु abc xyz ट्रू नो तो समान हैतांता ट्रू हैतांता राइट सिंपल नॉट इक्वल टू एटा ट्रू यस abc नॉट इक्वल टू xyz इट्स ट्रू राइट सिंपल वेरी सिंपल बुझी गला बट ई जो हाइपन जेड आ हाइपन एन विषय जाने पहिले हाइपन जेड कोन कहछ ना चेक्स इफ द गिवन स्ट्रिंग ऑपरेंड साइज इज 0 तो जदी a रो वैल्यू 0 अछि बा नल अछि देन ट्रू हबो जेतु a रो वैल्यू एठी कोन अछि ऑलरेडी abc अछि a रो वैल्यू जदी 0 थिबो बा नल थिबो ट्रू होबा कथा एठी कोन abc ऑलरेडी अछि देन नॉट ट्रू बुझी पालो z में जदी हम लिखुचे
if the operand size is 0, then if it is 0 length, then it returns true. Length our ABC already achi. Hyphen n kon use hoche? Checks if the given string operand size is non-zero. Jodi kichi achi, non-zero string achi, then it returns true. Okay? If it's a non-zero length, then it returns true. See? Hyphen n $a is not false, means it is true. Is not false means it is true because $a contains ABC, right? ये दीटा विषय जमा कंफ्यूज होबनी बेले बेले कंफ्यूज हेले भी तमे चेंज कर दबो z आउ n को चेंज कर दबो z आउ n को चेंज कर दबो राइट देन स्टिल कंफ्यूज हो छ इंटरनेट रे सर्च करिकि तमे रिक्वायरमेंट तमे जदि जानि पारलो देन यू कैन इजीली फाइंड इट आउट सेति पय जतले गाइस तुमको बुझौ सब बेले जतले प्रोग्रामिंग करछ तमे फर्स्ट तमे रिक्वायरमेंट को बुझिवा दरकार तमे यदि कंप्लीटली तमे रिक्वायरमेंट को बुझि गलो देन लॉजिक्स तमे पाइगलो लॉजिक कौन पकेर अछि बाकी जो कमांड्स जदि मने न पड़े देन यू कैन सर्च इन इंटरनेट एंड फाइंड इट एंड पुट इट बट इंटरनेट यूज करिया पूर्व तुम लॉजिक जाना थिया दरकार लॉजिक जाना पकेबा पूर्व तुमको रिक्वायरमेंट जानथिया दरकार यदि रिक्वायरमेंट कौन जानि न यदि तमे गोटे जगह को जिबार अछि तमे घर गोटे जगह को जिबार अछि को जगह को जिबो तमे जे जानि न तमे साइकिल धरिबो कि बाइक धरिबो सेटा केमति पुणी यूज करबो राइट तो केमिति जिबो कोन करबो तापर डिसाइड करबो तमे रिक्वायरमेंट हला ए टू बी मते जिबार अछि तो फर्स्ट तापर रिक्वायरमेंट जानि साला परे तापर तम लॉजिक पकेबो डिस्टेंस कैलकुलेट करिवो केते डिस्टेंस हबो यदि गोटे किलोमीटर में देन साइकिल जाई परिबी यदि 10 किलोमीटर्स 15 kilometers then cycle is not possible for me I cannot ride the bicycle then I should go with by a bike motorbike then motorbike mu use कर परिबी जदि तार भी मोटरबाइक अछि तो मोटरबाइक माने कोन जदि जानि तापे पुनी अलगा माने लॉजिक तम चेंज हो देम गोटे ऑटो बुक करिबी ओला बुक करिबी किछि उबर बुक कली गली जदि मोर निजर कार अछि देन आई कैन ड्राइव द कार आल्सो तो ई सब तम रिक्वायरमेंट जानिला परे तमे लॉजिक पकेबा स्टार्ट करी से हिसाब रे तमे को पुट करिवो तो स्ट्रिंग माने तमे चेक करिवो whether the operand has some value checks if string is not empty string माने has a value right has a value is not empty then it is if it is empty then it returns false $a is not false means obviously $a is not false a एटी कोन अछि abc असाइन कराइछि a रा वैल्यू abc अछि तो is not false perfect is not empty a रा value is not empty it has a value abc बुझि पाइलो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्लियर अब हम तो प्रैक्टिस करिया दो तीनटा छोट छोट प्रोग्राम लिखिबा तो हम कंप्लीट आइडियाज पाइ जिबा ता विषय राइट देन नेक्स्ट आसुछि कोन हमर फाइल टेस्ट ऑपरेटर नेक्स्ट आसुछि फाइल test operator. So what is this file test operator? Assume a variable file holds an existing test and the size of the 100 bytes. Put a 100 bytes file test operator. File test operator बहुत important guys कारण तुम जो फाइल ऊपर काम करिवो फाइल रो कंप्लीट इंफॉर्मेशंस तुम चेक करि पाइबो यदि -b तुम यूज करछो फाइल ना -b रे यदि चेक करिवो whether the file is a block file or not then -c checks if the file is a character special file. Is a character special file. -d checks if the file is a directory. तमे चेक करिया चाहौ एटा गोटे डायरेक्टरी की नॉट डायरेक्टरी नुह देन -d ऑप्शन और जे -f ऑप्शन यूज करिवो चेक इफ द फाइल इज एन ऑर्डिनरी फाइल यदि गोटे ऑर्डिनरी फाइल देन एटी शो करिवो -f file na -g checks if it has a group id set -k it checks if it has a sticky bit set सेमती बहुत सारा ऑप्शंस अछि तमे तो मने रखिबोनी बट इंटरनेट तमे इजीली पाइ जिवो फाइल टेस्ट ऑपरेटर ऑफ लाइनक्स तमे मारे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स तमे पाइ जिवो तो मु ये डॉक्यूमेंट्स भी लाइनक्स इंटरनेट रु आनि के ही डॉक्यूमेंट बनै छी राइट तो तमे इजीली इंटरनेट रु सब डॉक्यूमेंट्स तमे पाइ जिवो राइट सेमती -p फाइल तो -p फाइल रो कोन अछि पाइप फाइल ना t एला डिस्क्रिप्टर फाइल -u
यूसीडी बट बेसिकली तुम जो चेक करियो बेस बहुत इंपोर्टेंट किछि रोज सब जगह तुम यूज करबनी बहुत किछटा कोडा यूज करम तुमको बते देबी आ भितरु ओइ दीटा यूज हो राइट मैक्सिमम यूज हो ए दीटा -d-f आउ बाकी यूज हो ए दीटा नॉर्मली एक सब चेक करे दरकार नहीं बट रेयरली एक यूज करिवो बाकी तो मोस्टली चेक हुएनी बट मन रखि था एटा यूज करि परिवो -ul चेक द फाइल हैज इट्स यूजर आईडी सेट -r माने फाइल रीडेबल अछि ना नहीं चेक करिया पई -r यूज कर परिवो -w राइटेबल अछि ना नहीं -x एक्जीक्यूटेबल अछि ना नहीं गोटे फाइल एक्जीक्यूटेबल अछि ना नहीं तमे फर्स्ट चेक करिवो तापरे एक्जीक्यूट करिवो राइट but data -s or -e is both important both is very important okay both important अछि -s जेतोल देखा जेतोल गोटे फाइल साइज माने कोन अछि चेक इफ फाइल has size greater than 0 जदि फाइल साइज ता greater than 0 अछि माने गोटे फाइल 0 बाइट फाइल नुहो तो गोटे क्वेश्चंस आसीबो तमरो रिक्वायरमेंट आसीबो फाइंड all the 0 byte files and delete them or rename them then तमे फर्स्ट ए कंडीशंस पुट करिवो -s चेक करिवो फाइल साइज 0 अछि ना नाही जदि 0 देन कोन false हबो if greater than 0 then if yes the condition becomes true जदि greater than 0 हैला ताले ट्रू करबो जदि 0 रहिला false आसीबो तो ठीक अछि फाइल साइज हमर नेतिले कोन 100 bytes then it is false right sorry true because size has greater than 0 अछि -s ता -e ता केतो हमें चेक करिवो फाइल हमर एग्जिस्ट अछि ना नाही ओके इफ फाइल एग्जिस्ट और नॉट तो सेठी हमें चेक करिवो -e ऑप्शंस तो जो प्रोग्राम तमे लेखिवो किछि रिक्वायरमेंट तमे आसला तो फाइल ऊपर काम करूचो फर्स्ट चेक करिवो गोटे फाइल एग्जिस्ट अछि ना नाही जदि एग्जिस्ट अछि देन तमे सही हिसाब रे तमरो नेक्स्ट कमांड कोन एग्जीक्यूट करिया कथा करिवो तो नॉर्मली कोन जदि फाइल एग्जिस्ट नथिवो एरर थ्रो करिवो तो एरर थ्रो करिया पूर्व हमें कैप्चर करना जे फर्स्ट चेक कर दो फाइल एग्जिस्ट अछि ना नाही सिंपल ओके सेल डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग ता हमें काली पढ़िबा बट मु गोटे जस्ट ओके दिस नेक्स्ट क्लास हमें डिसीजंस मेकिंग ऊपर डिस्कशन करबा तो बेसिकली हमें जहाँ भी आज पढ़िले राइट ऑपरेटर्स ऊपर ये ऑपरेटर सब जाक जहाँ भी पढ़िले सब्स्टिट्यूशंस और ऑपरेटर तमे आज जस्ट ओवरव्यू नै जीव सब तार प्रैक्टिस करबा बट आउ जो जदी हमें सेल्फ स्क्रिप्टिंग न पढ़िबा देन हमें को प्रैक्टिस कर परिबानी राइट सॉरी जदी हमें डिसीजन मेकिंग न पढ़िबा को प्रैक्टिस कर परिबानी ओके let's start with the decision making it will be very simple also मैं खाली conditions जल्दी जल्दी कहि देबी तो हमें बहुत easily पहुंची okay let's start the decision making also so आउ 10-15 मिनट मत लागियो मैं कंप्लीट कर देबी सर डिसीजन मेकिंग सो डिसीजन मेकिंग रे हमर बहुत सिंपल गाइड सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे इफ एल्स कंडीशंस हमें यूज करछे राइट इफ एल्स जदी एटा होची देन काम करो जदी न होची एल्स एटा if true execute else execute this simple right but आर जो स्टेटमेंट अछि लेखिबा पाए लिटिल डिफरेंट आर तीनटा वे हम लेखिबा if p statement if else statement खाली if लखुचे if statement decision making if decision if else आउ nested इक्वल्स ए तीनटा ही हम काम करी ए तीनटा ही हम काम करी सिंपल सिंपल गोटे एग्जांपल दे दोची इफ आउ फी तो हमें जते बळे लाइनक्स शेल स्क्रिप्टिंग रे काम करबा डिसीजंस मेकिंग ऊपर द इफ कंडीशंस हम लिखुछु त कंडीशंस लखे मन रखताओ इफ लिखिले तापर स्पेस देकरी स्क्वायर ब्रैकेट सेते में देखुतली जते बळे कंडीशंस हम ऑपरेटर पढुतले मु कोन कहउतली स्पेस दबाइटी डॉलर ए देलो इक्वल टू धर दली स्पेस डॉलर बी if $a equal to b then english line हिसाब रे वर्ड तमे लिखिबो देन जा काम करिया कथा काम इको जा प्रिंट करिया कथा प्रिंट करो बा जे कोनसी कमांड एग्जीक्यूट करिया कथा आ भीतर तमे एग्जीक्यूट करो
हे गला सरी गला पर आकु इफ ब्लॉक को केमिति एंड करियो ना तार उल्टाटा लिखिबो फी इफ फी right कि other programming language देखिबो if you go to other programming language python हो java हो c++ हो .NET हो java तांकर different style of writing the decisions making syntax different तो ये syntax टा भी तुमे देखिबो सेल स्क्रिप्टिंग रे बहुत सिंपल अछि स्क्वायर ब्रैकेट भीतर तुम डिसिशंस टा कोन डिसिशंस नब स्क्वायर ब्रैकेट भीतर रखिबो if लिखलो if decision making जदि true होछि then execute this otherwise not if रे बहुत सिंपल एटी कौन कला ए सिंपल टा लिखला गोटे सेल स्क्रिप्ट भीतर a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 नि आइछि if a इक्वल टू b देखो a is equal to b a is equal to b प्रिंट कर दला राइट जदी फॉल्स हेतिबो देन कोन हबो प्रिंट करिवनी तो a डॉलर इक्वल टू b ता माने कोन a 10 अछि b 20 अछि एटा कंडीशन कोन सैटिस्फाई हेलानी तो एठी कोन किछि प्रिंट करिवनी राइट तो आकु प्रिंट करिया पई कोन हबो मु जदी इफ एल्स लगेबी कोन हला एठी कोन हला इफ एल्स रे कोन अछि आर सिंटैक्स हला तमे इफ नेलो डिसिशंस कोन चेक करा कथा चेक कलो देन प्रिंट कलो तापर कोन एल्स जदी कंडीशन ट्रू हेल जदी एटा ट्रू हेल देन प्रिंट एटा जदी फॉल्स हला प्रिंट दिस वन तापर आकु एंड करिवो कोथरे पीरियड एटा हला इफ एल्स स्टेटमेंट तो ये सिंपल एग्जांपल हमें देखिबा एटी कोन अछि a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 एडी कंडीशन चेक कला डॉलर a इक्वल टू डॉलर b जदी एटा कोन अछि ट्रू हेलानी एटा कोन फॉल्स हला माने कोड पडिवो एल्स स्टेटमेंट रे एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करबो a is not equal to b लास्ट हमें दे खाली इफ कंडीशन रे कोन हला सैटिस्फाई हेलानी बट प्रिंट करिया पे किछि हमें देइने एल्स रे देइने सिंपल एटा भी तमरो कोन रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे याकू यूज करि पारि राइट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज ओनली इफ एल्स भी हमें इफ एल्स टा जदि एटा ट्रू नो देन फॉल्स रे कोन होबो सेटा तमे लिखो देन हमें एल्स स्टेटमेंट रे लिखलो तार सिंटैक्स टा हला एटा ए टाइप रो इफ कंडीशंस देलो देन प्रिंट करो else print this one p चलो simple the next one comes the nested if रे हम आसुचे एटा nested नो एटा हला if else if nested टाइप रो काम करछि nested if आकु कहल nested if काम करबे if elif अलगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कोन थिबो else if थिबो राइट एठी कोन दोची एल इफ तो एठी कोन ला फर्स्ट कोन करिवो से चेक कला फर्स्ट हम कोन चेक करछि लेट मी क्लीन इट आउट ओके फर्स्ट चेक कोन कला से कोन कला इफ देला कंडीशंस चेक कला इफ ट्रू देन प्रिंट दिस तार पुनी आ गोटे चेक कला else if आ गोटे कंडीशन चेक करिवो else if elif ता लिखा होची पुनी गोटे कंडीशन चेक करिवो true then print this पुनी जदि एटा ट्रू न होला फॉल्स होला पुनी गोटे फॉल्स रे पडिवो else if पुनी चेक करिवो राइट एगला तापर जदि एंड करिवो else आउ फी एटा देखो else if यूज कला तापर एल जेतु else if यूज कला if पर क्लोज कला with else and then final close with fee सेटा हमर nested if तापर आ गोटे अछि केस स्टेटमेंट लूप टा में परे पडिया खाली क्लास में बट केस टा भी अच्छा केस स्टेटमेंट और लूप टा में परे पडिबा ठीक है डिसिशंस मेकिंग पे केस भी जाउचे बट केस स्टेटमेंट टा और लूप टा में नेक्स्ट क्लास रे पडियो आज ही हमें कोन इफ स्टेटमेंट ऊपर काम कले इफ else if और इफ स्टेटमेंट कंप्लीटली डिसिशंस मेकिंग ऊपर काम कले आ गोटे डिसिशंस मेकिंग केस भी जाउचे बट दिस विल डिस्कस इन आवर टुमारो क्लासेस ओके
गाइस सिंपल है बट मु जो गोटे क्विकली गोटे छोटो प्रोग्राम कर जहाँ भी सब लिखा है गोटे क्विकली गोटे छोटो प्रोग्राम कर दउछि राइट ए जो जहाँ भी एटा हमें वर्तमान देखले आरो गोटे छोटो प्रोग्राम कर दउछि राइट क्विक कर दा बहुत सिंपल है जो तो तमे प्रैक्टिस करया पे तुमको इजी भी है तो ए डेमो ऑपरेटर मोटा अच्छा दीटा ही देइतली तो लेट्स सेव दिस वन आ गोटे क्विकली कर दउछि decision demo.sh बस ओके हमें मु कौन कली a equal to suppose 20 b equal to suppose 30 नहीं गली a equal to 20 b equal to 30 तो मैं if conditions लिखली if square bracket दीटा सॉरी square bracket दीटा दे देली तापरे कौन करिवे ना बेसिकली स्पेस दे दबाटा ही बेटर रहयो स्टार्टिंग री तमे स्पेस दे दियो राइट तो मैं कौन करी स्पेस बटे दे देली स्पेस देकरी कौन करबी लिखबी चेक करबी $a equal to $b राइट देखो तापर कौन हला देन एंड कली सपोज फिर मुझे जहाँ लिखा कथा लिखी राइट मुझे एको यस ए इज इक्वल टू बी सिंपल गोटे स्टेटमेंट लिखिदेली यस ए इज इक्वल टू बी एटी जो मुझे लिखुची देखो स्क्वायर ब्रैकेट विथ पर गोटे स्पेस $a गोटे स्पेस equal to space $b space okay तापर statement लिखी right let's check this one okay let's do किछि प्रिंट कलानी किछि प्रिंट कलानी तो हमें कौन पढ़ी ऑब्वियसली एटी किछि प्रिंट करबेनी को हमें देखिदेले एटी हमें कंडीशन कौन चेक करिचे एटी कंडीशन हमें एटी चेक करचे a इक्वल टू b बट हमर a अछि 20 b अछि 30 इक्वल नुहो त हमने कंडीशन ट्रू हेलानी त हमने किछि प्रिंट कलानी सरी गला जे हमें एल्स पार्ट लिखिने एटी बट सेही दिन सेटला मु जदी एल्स पार्ट ऐड कर देबी एटी कोन करबी एल्स पार्ट ऐड okay before going to else part let me show you if I remove any space here what it will give देखो मु गोटे स्पेस गोटे रिमूव कर दले जानि करी राइट तो तुम गोटे डेमो देखै दोछि कारण तमे एटा स्पेसिफिकली बहुत नजर रखिथिबो कारण सब ठीक ठाक लिखिथिबो किंतु गोटे स्पेस एक्स्ट्रा रहि नथिबो गोटे एक्स्ट्रा थिबो किबा स्पेस नथिबो तो सेठी कोन ना एरर दो तो तुम जानि पा नथिबो राइट देखो मिसिंग एटी देख दले एरर तुम जानि गलो जे स्पेस मिसिंग ना एरर थ्रो कला राइट तो सही हिसाब तुम लिखला बेले केयरफुली ताको यूज करियो राइट स्पेस दे देली ठीक अछि वर्तमान हमें एल्स रो लिखि दबा एल्स पार्ट लिखिबी इफ a equal to b if a equal to b then print एरा जदी इक्वल नुआ एल्स स्टेटमेंट लिखिया एल्स एको no a is not equal to b a is not equal to b let's save it save गला let's execute देखो एटी प्रिंट कला कोन नो a is not equal जेतो हमें else पार्ट रे रखि देले तो एटी कोन हैला ना से फर्स्ट कंडीशन एटी चेक कला डिसीजंस जो मेकिंग रो एटी कंडीशन फर्स्ट चेक कला a equal to b तो ट्रू नो फॉल्स हैगला फॉल्स हैला माने एठी की न आसी की से कोन आसला else पार्ट को पळे आसला कंट्रोल कोन आसला else पार्ट को पळे आसला देन इट प्रिंटेड ओवर हियर it printing over here very simple right तापरे मु एठी कोन कोछ ना सपोज अलगा किछि चेक करी राइट से तो मु नेस्टेड इफ यूज करबी एठी कोन करबी आ गोटे स्टेटमेंट मु एठी लिखुची elif लिखिबी if else if एठी if स्टेटमेंट टाइप का हमको लिखिबा पड़िबो else if $a hyphen
GT greater than hyphen greater than space $B जदि greater than B then हम लिखे then echo A is greater than B रहिला राइट तापरे हमें प्रिंट कर चेक करिवा ना नो A is not equal to B प्रिंट कला राइट एठी कोन हला ना A is greater than ता माने कोन हला फर्स्ट कंडीशन चेक कला एठी फॉल्स हला पुनी एठी चेक कला एल्स रेटी पडिला ना एल्स इफ रेटी पडी करी चेक कला फर्स्ट चेक तापर चेक कला A greater than B ना नहीं ना फॉल्स हला देन पडला कोडी एठी no A is not equal to B then it printed this one तो मुझको आउ टिके मॉडिफाई करछि आउ गोटे else if एठी लिखुछि राइट कोन लिखि बेटी elif मेटी कोन करछि दे दोछि $A less than $B then equal A is less than B simple लिखली right then let's save it कौन A is less than B true statement हमर कोड true हैला ए पर्टिकुलर लाइन रे ए कंडीशन चेक रे हमर स्टेटमेंट ट्रू हे गला A 20 अछि B 30 अछि लेस देन B ट्रू देन एटा प्रिंट कला आ ए लाइन को असलानी बुझि पड़लो तो एटा मोटे सिंपल एग्जांपल दुईटा नै करी हमें कल से हिसाब रे तमे गोटे कैलकुलेशंस तमे गोटे टास्क दोउची तो जहां भी हमें आज पढिले सेटा बुझि करी गोटे टास्क देबी तमे गोटे स्टूडेंट रो ग्रेड सिस्टम गोटे बनैबो जोटा कि मो सब प्राय कहबा हुए तते तुम जानि परियो ग्रेड सिस्टम इन द सेंस तमे किछिटा मार्क नबो स्टूडेंट रो किछि मार्क नै जो सपोज मैथमेटिक्स चारटा सब्जेक्ट नै गेलो कि तीनटा सब्जेक्ट नै गेलो चारटा सब्जेक्ट नै गेलो सपोज मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश संस्कृत किछि भी चारटा सब्जेक्ट बा तीनटा सब्जेक्ट नै गेलो तार एवरेज बाहर करिवो एवरेज तो कैलकुलेशन तुम जानि छ एवरेज केंति बाहर आयो एवरेज बाहर कला परे तापरे कोन करिवो ताको तो एवरेज जदी ग्रेटर देन 70 हेतिबो ताले ग्रेड A और ग्रेटर देन 60 लेस देन 70 ग्रेड B समथिंग लाइक दैट तम हिसाब रे तमे एटा करिवो ट्राई करो करबा पे जदी न होछ हम नेक्स्ट क्लास रे ये प्रोग्राम टा करिवो ता सहित केस स्टेटमेंट टा भी पढिबो और ता सहित हम लूप भी देनी ठीक अछि चलो गाइस बाय बाय आउ जेहेतु हम एटा बहुत समय आज पढ़िले जहां भी सब्स्टिट्यूशंस ऑपरेटर आउ डिसिजंस मेकिंग तो तुम निहाती भाव तुम प्रैक्टिस करिवो आ प्रैक्टिस करिकरी छोटो मोटो प्रोग्राम तुम हिसाब रे तुम एक्सप्लोर करिवो एक्स्ट्रा जदि एक्सप्लोर न करिवो देन प्रैक्टिस करि परिबो राइट ओके गाइस दैट्स ऑल बाय बाय सी यू तो आज वीडियोटा कि